current affair for August 2022, specially for Odisha civil service examination ki Odisha current affair ko relate koruchi. So first, so India adds 11 more wetlands to the list of Ramsar site. Okay. Now, before going to the technicality of Ramsar sites, the wetlands and all, से details भी तो अच्छी हमें discuss करेगा, किंतु ता पूर्वरु just जानिबा कि को तीनिटा माने को तीनटा हमर newly add हैला and एई month रे means August month रे ही हमर चारिटा Ramsar site add है चारिटा recently जोटा हमें देखिबा कि recently बेका जो end of the August रे Tampara lake in Ganjam, Hirakud, Ansupa and 4 August रे 4th August रे आ गोटे साइड एड हेतला जोटा कि होची Satkosia. So 3 from Odisha out of 11 and previously added Satkosia, Chilika and Bhitarkanika. Already amara Chilika first designated Ramsar site हिसाब रे Odisha रो first आसला Chilika. Okay, India रो भी total इतला amara lagoon हिसाब रे. Then brackish water ये lagoon जानते समझते Bhitarkanika तापरे आसला. So discuss करिबा याकू माने डेलीवर के कतले या जो साइट ता जो पीआईबी रे आसे हमरो पीआईबी रे ओके के तक कहतले लाइक यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव एबे जो प्रेजेंटली अछि तो याकू मिसे कि हमरो जो टोटल ता 11 रामसर साइट एई मंथ रे एड हेची ताकू मिसे कि हमरो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट अछि 75 ओके मन रखितबे 75 टा रामसर साइट्स अछि हमरो टोटल इंडिया and Chilika, Asia's largest brackish water lagoon and second coastal lagoon in world, was designated first in India wetland international importance. And October 1981 ने introduced Chilika, add करा इतला Ramsar site हिसाब रे. After that, Bhitarkanika mangroves ये designated इतला 2002 रे. मन रखितबे पूरा serial wise मन रखितबे. Then Satkosia आसिला. Regarding Satkosia detailed discuss करिबा इस slide पर. Then कौन हेची ना टम्पड़ा गंजाम रे जोटा हेची फ्रेश वाटर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ओडिसा रो देन हीराकुद एंड अंशुपा रिसेंटली एडिज एंड अंशुपा आपण जानछथि ये मध्ये फ्रेश वाटर लेक आउ कोन यारो इंपोर्टेंस कोन रिगार्डिंग अंशुपा यार स्ट्रक्चर वाइज तो रिवर ड्रेनेज सिस्टम रे आपण पढिथिबे फ्लूवियल जेतले ज्योग्राफी रे फ्लूवियल लैंडफॉर्म रे आपण पढिथिबे लाइक meandering format रे जेतले हमर आसे Oxbow lake yes sir ओडिसा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक अशो पुराकृति जो तार स्ट्रक्चर टे अछि अंशुपा लेक रो एंड फ्रेश वाटर लेक तापर जानिबा कि Satkosia रिगार्डिंग नाउ Satkosia जोटा अछि लोकेशंस वाइज नयागढ़ एंड सम काइंड ऑफ भुवनेश्वर किछि पार्ट्स ये टच करछि ओके अनुगुल लो किछि पार्ट टच करछि जदि आपण माने मैप रे देखिबे इजीली पाइजो Satkosia Gorge ना Gorge एंड कैनियन विषय आपण डिटेल रे जानिथिबे पूर्वरु बा जो माने अटेंड करथबे ज्योग्राफी क्लास सेमिनार में जानिथिबे व्हाट इज Gorge व्हाट इज कैनियन द नैरो स्ट्रेच ऑफ रिवर महानदी नियर टिकरपड़ा ओके सो टिकरपड़ा रे एक्चुअली रे कोन अछि टिकरपड़ा रे टाइगर रिजर्व अछि एंड टाइगर रिजर्व रो ये गोटे पार्ट Satkosia Gorge right and approximately 22 kilometer ये Gorge अछि and length of the part of Satkosia sanctuary covers an area of 795.59 square kilometer. So ये notified केबे हेतला स्टेट गवर्नमेंट को द्वारा 1976 रे एटी जहां भी इंफॉर्मेशन आज आपन को रहबो करंट अफेयर प्लस प्रीलिम्स प्लस मेंस रो आपन को रहबो जीएस पेपर पे. So the Gorge is known for its rich, unique and biodiversity, especially for the presence of gharials, magar, rare freshwater turtles and few other species. Now the Ramsar site recognitions will help. केमती भाबरे ये हेल्प करबो Ramsar site हमकु मिलले हमरो कोन डेवलपमेंट रे कोन हेल्प करबो right. So Ramsar sites recognitions will help us to get more government support for conservations of its biodiversities, more on conservations of the biodiversities as the area falls within the core area. जो core area रे जते भी सब रहिबो तो सब किछि हमर गवर्नमेंट रो एड मैक्सिमम रो मैक्सिमम आसीबो
बुझी पारछंती सो एज पर द नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट जो 2011 रे रिपोर्ट बातला ओडिसा रो पर्टिकुलरली 6907 हेक्टर एरिया अछि अराउंड 4.49% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल लैंड रो जोटा की डेजिग्नेटेड हेची एज स्टेट एज वेटलैंड्स कोन हमें डिस्कस कर रहे यहाँ पर ही एंड रामसर साइट टैग जोटा की मिलितला सातकोसिया को अगस्त एई वर्षर एई मासरे अगस्त 4 तारिख रे मिलतला ता परे ही 11 टा न्यू एड हला जोथि की टंपरा आसिला देन आसला अंशुपा एंड हिराकुद ओके सो मेकिंग द थर्ड सर्च साइट सो सीरियल वाइज देखिया पे गले फर्स्ट आसिला चिलिका ओके सेकंड भितरकनिका थर्ड आसिला हमरो सातकोसिया एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जो गोटे स्लॉट रे आसला सेटा होची टंपरा हिराकुद एंड आपनकर आसिला अंशुपा clear now jira mein wetlands regarding what is wetlands are called ramsar sites okay ramsar is nothing but ye what is city of iran okay jota ki 1970 re hitla ya international treaty hitla for the conservation of sustainable use of wetlands was signed at ramsar the convention's mission is the conservation and wise use of all wetlands okay through local and national actions and international cooperations international organizations to hame help aniba aid aniki taro conservations kariba now etikar jo report e bare Montreal's record jota ki maximum time apan ko examination ase Montreal's record related to what now it is related to ramsar site designations okay ramsar site बहुत सारे रिपोर्ट्स आसे इंडेक्सेस आसे so the question apan kar ase Montreal's record it is related to what it is related to ramsar site clear now it is register of wetland site on the list of wetlands of international importance works closely with 6 organizations याको अपन मन रखितबे एंड अपन को पय टास्क होची एठी जत्ते गुडा भी ऑर्गेनाइजेशंस होची तारो हेडक्वार्टर अपन सर्च कर दिया सो नोन एज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पार्टनर्स रामसर साइट सहित इंक्लूड है कि को माने काम करंती बर्ड लाइफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN यार हेडक्वार्टर मस्ट पड़े एग्जामिनेशन से इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स वेटलैंड इंटरनेशनल WWF इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट WWT एग्जामिनेशन में मस्ट गोटे ऑर्गेनाइजेशंस रो हेडक्वार्टर आपन को निहाती भाबरे एग्जामिनर पचारंती आपन जानि छथि तो अननेसेसरी अपन जदी गोटे लिस्ट टू प्रैक्टिस करबे सेटा केबे भी फ्रूटफुल हबनी जोटे करंट अफेयर किछि इवेंट्स सहित रिलेटेड थिबो करंट सहित किछि रिलेटेड थिबो सेही ऑर्गेनाइजेशंस एंड खास करी अपन करो UN ऑर्गेनाइजेशंस UN किछि भी जदी ऑर्गेनाइजेशंस अछि तारो अपन फुल फॉर्म्स देखंतु एंड तारो केबे क्रिएट हेतला एंड को प्लेस रे तार हेडक्वार्टर अछि ताको मस्ट करिवे प्लस जो गुडी को करंट अफेयर जो गुडी का आछि तारो हेडक्वार्टर मस्ट करिवे ऑर्गेनाइजेशंस रो निहाती भाबरे गोटे क्वेश्चंस आसे then wetlands and what is wetlands are those areas where the soil is covered with water or can be present near the ground throughout the year it supports both terrestrial and aquatic world's first site jota thila cover okay peninsula in Australia ye designated hitla ke 1974 ye world ro first site extra knowledge point the largest site at Nigri Tumba Mendobe in democratic Republic of Congo then Queen Maud Golf in Canada these sites each cover 60,000 square kilometer largest Ramsar site then the country with the most site are the United Kingdom with 175 and Mexico tapare Mexico chi 142 ta Ramsar sites hochi Bolivia has the largest area with 1,48,000 square kilometer under Ramsar protections right coming to the next Odisha government to start high sensitive test in district with malaria border after the success of Durgam Anchal malaria nirakaran जोटा कि दमन स्कीम ने कि रिसेंटली एबे आपण जे देखिबे चेक करिबे लाइक मूवी गोटे आछी दमन रिगार्डिंग ओडिसा रे सेटा बेस्ड ऑन दिस स्कीम and the surveillance of contaminant measures
to eliminate the malaria in the district with the high annual parasite index. यारो help फलरे हमने eradicate करिवे. Okay, with highly sensitive rapid diagnostic test HSRDT will be set up in the collaborations with Malaria No More. Now Malaria No More गोटे NGO टा ये डेंगू ପାଇଁ करतला या बहुत सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो यारो कोलैबोरेशंस रही छी तो ता सहित टाई अप कि ओडिशा गवर्नमेंट कोन करिवे ना इरेडिकेट ପାଇଁ ट्राई करछंती विथ द हेल्प ऑफ एनुअल पैरासाइट इंडेक्स जो नेकी. ओके, सो ओडिशा हैज रिपोर्टेड 13 malaria death in 2021 as compared to the 9 death in each 2020 and 2019 and 3 death in 2018. The state was ranked second. State to जदि हम स्टेट वाइज रैंक देखबा ये सेकंड प्लेस अछि आफ्टर छत्तीसगढ़. नाउ छत्तीसगढ़ इंडिया रा सबटू हाईएस्ट माने जो मलेरिया जो होची इन्फेक्शंस जो डिजीजेस होची सेते छत्तीसगढ़ हाई रैंक रे अछि, नंबर 1 रैंक रे अछि, तापरे अछि ओडिशा. राइट नाउ मलेरिया सिनेरियो इन इंडिया एंड ओडिशा केंटियर मलेरिया सिनेरियो अछि पूरा ई डाटा सब नै कि हमें जानिबा क्लियर हेबा ना. इट इज the age old mosquito borne parasite disease known to all and ये कहा द्वारा होता है फीमेल एनोफिलिस फीमेल एनोफिलिस. ये क्वाइट अपन को साइंस पार्ट रे आसे जतले इजी इरु मॉडरेट लेवल साइंस क्वेश्चन सेट हुए ई टाइप के क्वेश्चन आसे. ओके, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ओके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ले यारो रैंक रेस्पेक्टिवली 4 and 3 अछि तारो गोल जो सेट करा है sustainable development goal and millennial development goal. And the United Nations trained their focus on malaria mortality morbidity especially among the children under basic are 5 years of the age under 5. Okay, under 5 मान को पई basic mortality and morbidity रो risk factor होची. So World Health Organizations adopted the global technical strategy reduced malaria incidence and mortality rates by at least 90% worldwide by 2030. 2030 सुधा सेमन को ट्राई रहइबो कि at least 90% तो सेमने eradicate कर देबे. So India is one of the 11 high malaria burden country in the world. Odisha has always India जदि 11 नंबर आछी ओडिसा रो फर्स्ट आछी हमें देखियो कि सेकंड जोटा नंबर आछी कि तो ओडिसा कंपैरेटिवली सबले रही आछी hotspot हिसाब रे. So Odisha has always been significantly high historical as it contributed to 40% of the country's total burden of malaria in 2017. Contribute करतला. The National Malaria Control Program NMCP was launched in 1953. Okay, and delivered astounding result within 5-year period. Thereafter, NMCP was renamed to National Malaria Eradication Program (NMEP). NMCP जो थिला से NMEP होला in 1958 रे with the view to eliminating the disease entirely. अगर view जो policy से आनले view थिला ता कोन कि completely eradicate कर देबे. With further change in policy, the program was renamed as National Anti-Malaria Program (NAMP) in 1999. Now, in 2005, an intensified malaria control project. Now, एथरे जहाँ सब डाटा अच्छी ये अपन करो हेल्प करिवो भाइबा रे एंड मेंस रे. ओके, प्रीलिम्स रे यार एते इंपोर्टेंस रहबोनी कारण प्रीलिम्स रे ये सब जिंस एते डीपली आसेनी ओडिसा रिगार्डिंग यार इंपोर्टेंस रहबो अपन को जीएस पार्ट रे ओडिसा रे जते क्वेश्चंस आसीबो ओडिसा रे जते रीजनल डिस्पैरिटीज आसीबो रिगार्डिंग डिजीजेस आसीबो तते मलेरिया इशू निहाती भाबरे आसीबो तो मेंस and viva round रे आपन को ये निहाती भाबरे हेल्प करिवो. In 2005, intensified malaria control project was launched with the assistance of Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे ओडिशा झारखंड एंड वेस्ट बंगाल थिला एका संग रे आपन को AIDS, Tuberculosis and Malaria ପାଇଁ फंड आस्तला with the help of rapid diagnostic test. Okay, in 2007 the Odisha Health Sector Plan at the Department for International Development DFID of the United Kingdom Mo Mosari meaning our bed net scheme ये ओडिसा रे लागू करतला with the help of United Kingdom. So एबे जो देखुचंती आपण मैप रे जो देखुचंती मलेरिया प्रबल जो एरिया अछि मयूरभंज केउझर देवगढ़ सुंदरगढ़ अनुगुल देन कंधमाल ओके मालकानगिरी these are the district. So दुर्गम अंचल मलेरिया निराकरण एबे हम जिबा दमन स्कीम को ये लागू हेतला आपनकर ये इफेक्टिवली आस्तला 2017 रे.
right? The main objective of Daman was to supplement the routine malaria control activities and fill the gap in case finding and treatment as well as control the high endemic remote pocket of states. Three pillars upare ye काम करतला को pillars upare mass screening upare काम करतला by using the RDT rapid diagnostic test followed by treatment of RDT positive case in the camp approach. Camp से मैंने सेटअप करतले जदि पॉजिटिव फाउंड होतला तो सामने ता कोन करतले मास स्क्रीनिंग करके तार ट्रीटमेंट करतले. सेकेंडली कोन होला second होची vector control measures that included the LLIN distributions. Now LLIN माने long lasting insecticidal नेट जोटा कि सिंपल लैंग्वेज रे हम कहबा जो मशारी में नेट मस्किटो नेट जो बोलते ताको डिस्ट्रीब्यूट करथले प्लस कोन करथले जो वेक्टर्स माने जो आपन को डिजीजेस होची ड्यू टू द मस्किटोस कहा ऊपर इफेक्ट करची मामल्स ऊपर जस्ट नेट. So vector control vector control कौन ना vector control it is related to like any method limited करिबा eradicate करिवो कहा द्वारा like जते सब mammals अछंती ओके arthropods birds insects जो मन को द्वारा कि एटा माने डिजीजेस ता गोटे प्लेस रु आ गोटे प्लेस को जीवो ओके बेसिकली ये पैथोजन हिसाब रे वर्क करिवो दैट इज नोन एज द वेक्टर फॉर दिस डिजीज. तो दमन वेयर planned to be carried out mainly through ASA, ASA worker को द्वारा village level community volunteers twice a year वर्ष रे दी थर याकू दमन स्कीम हिसाब रे वर्क कराउतला. फर्स्ट केतले ना फर्स्ट ड्यूरिंग प्री मानसून टाइम ओके. सो जो स्क्रीनिंग आपन कर हबो प्री मानसून टाइम रे फर्स्ट फेज रे दीटा फेज रे वर्क कराउतला वर्ष रे प्री मानसून टाइम रे लाइक मार्च एंड अप्रैल एंड मे when the entire populations in the targeted village by hamlets माने गोटे गोटे विलेज रो एंटायर पॉपुलेशंस को सामने होतले मन रखितबे प्री मानसून टाइम रे फर्स्ट फेज होतला एंड सेकंड ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून आफ्टर मानसून सेकंड फेज होतला जोतरे की इंपोर्टेंस दिया होतला लाइक अक्टोबर नवंबर रे व्हेन ओनली प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन ताको ही इंपोर्टेंस दिया होतला. तो मन रहला फर्स्ट जो जतरा फेज रे एंटायर विलेज को निया होतला एंड सेकंड फेज रे आपन को ओनली प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन्स मन क्लियर. नाउ कम टू थर्ड करंट अफेयर. Odisha among 4 states chosen for NH quality test. Now, Odisha is among 4 states that has been selected for piloting of mobile inspections (MIVs) MIVs for quality inspections of national highways by Kadora conduct Ministry of Road Transport and Highways. The national highway through non-destructive testings (NDT) in Gujarat re work kochi, Rajasthan, Karnataka and tapare Odisha, right? As part of the pilot project, around 2,000 kilometers of national highways will be inspected in each state every quarter using MIV जो van टिकुने की like आपण देखितबे इंटरसेप्टर गोटे van आपण टाउन्स रे प्राय चलथाय इंटरसेप्टर जोटरे की आपण को स्पीड चेक हुए I think. So inspections would be conducted in various projects being implemented by NHAI, okay, National Highways and Infrastructure Development Corporations Limited, State PWD, three involvement car State PWDs and other executive agencies of Ministry of RTH, okay, transport. The ministry has taken initiative for GIS mapping. Now, what is GIS? What is GIS? System. Yes, Geographical Information System. So ये जो वर्क होची एनएच रो जहाँ डेवलपमेंट होची तारा स्पीड चेक होची गाड़ी से अंडर व्हिच स्कीम पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल जोटा कि असला पीएम गति शक्ति मिशन ओके. सो ये जो प्लान टिके देखि देबा हमें गति शक्ति मास्टर प्लान so aim to ensure integrated planning and implementations of infrastructure projects in the next 4 years. तो आगामी 4 वर्ष रे यार सब प्लानिंग से होची. So गति शक्ति ऊपर आसीबा तो गति शक्ति रो ये रोड नियर डिसेंबर मंथ ओके डिसेंबर मंथ एंड को मान को पई होची स्पेशली सेटा मेंशन कर दियंतु. तो प्लीज समस्त नोट डाउन करनेबे एंड मु पीपीटी रे मेंशन मध्ये कर देबी डिसेंबर मंथ रे भी होची एंड works on the ground of saving cost and creating jobs. Okay, the Gati Shakti scheme will subsums of rupees 110 lakh crores national infrastructure pipeline that was launched in 2019. Okay. Then come to this part.
नाउ एटा आपण डायरेक्टली जो देखुचंती मूव करबा जोटा आपण देखि पछंती स्क्रीन रे नाउ एटा गुटे एज इट इज नॉर्मल दिया है आपण कर ओके ये न्यूज़पेपर आस्ला आर्टिकल तो द स्कूल स्टूडेंट एंगेज इन वर्क and NCP PCR 6 report, National Commissions for Protections of Child reports. On Wednesday, South details for a report from the Jajpur collector on the incident where the school teacher had alleged engaged children in hazardous work. एथिरु हम पे important कोडा now this is not important बड़चना से ब्लॉक रहू किबा जाजपुर कलेक्टर देइछते सेटा हम पे important नुहे important कोथि पे now child labor हम पे important child labor in Odisha. Child labor in Odisha. ये आपनकर गोटे सिलेबस रे मेंशन अछि जीएस पेपर रे आपन मार्क करथिबे मेंस रो आंसर पेपर रे ओडिसा रो चाइल्ड लेबर तार रैंकिंग हो तार परसेंटेज हो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो को डिस्ट्रिक्ट रो बेसी रहउछन चाइल्ड लेबर सेटा सब वर्ष पड़े ओके अल्टरनेटिव वे रे प्राय पड़े सेटा ओके से ऊपर हम डिस्कस करबा रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर हां जदि हम पॉलिटी सेक्शन को जिबा regarding this issue. Article 23 and 24 related to this issue. Okay, prohibition of traffic and prohibition of employment of child labor. Now, ये तो है another thing. Prohibition of traffic in human being and forced labor. हमारा दरकार Article 24. Prohibitions of employment of children in the factory. Okay, so Article 24 says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Now, the article forbids the employment of children below the age of 14 in any hazardous industries. Okay, however, the employment of children is non-hazardous work is allowed. Previously, it allowed. So, laws that were passed pursuant of Article 24 in India, Koko laws of passed history. Now, the Factories Act 1948 after independence decided. This was the first act passed after the independence to set a minimum age limit for the employment of children in factories. What is minimum age would fix employment by parity. The act set a minimum age of 14 years. In 1954, this act was amended to provide that children below the age of 17 could not be employed at night. Okay. सेमने जो मानकर 70 एज रु तळको अछि सेमने रात्रि रे आउ काम करि परिबे नै रात्रि रे नाइट रे आउ काम करि 70 अपर एज ले सेमने रात्रि सारा काम करि परिबे ओके देन कोन आसला यस द माइंस एक्ट 1952 ये कोन कहूची दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स इन द माइंस ये मते रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर आछि कारण 18 वर्ष पूरी 17 वर्ष जो हम डिसाइड करथले फास्ट जे कि रात्रि रे काम करि परबिनी अंडर 17 हेले एंड अंडर 18 माने माइंस रे काम करि परबे ओके देन द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशंस एक्ट 1986 कोन कहूची दिस वाज अ लैंडमार्क लॉ एनैक्टेड टू कर्ब द means of child labor prevalent in India. Okay, it described where and how children could be employed and where and how this was forbidden. कोठी समने काम करि परबे को जगह रे काम करि परबे नि डिटेल ले मेंशन हेतला दिस एक्ट डेजिग्नेट्स a child as a person or the child को person हिसाब रे डेजिग्नेट कराइतला who has not completed his or her age 14th years of age. Okay, the 1986 act prohibits the employment of children in 13 occupations. तेरोटा जो लिस्टेड हेतला and 57 processes जो प्रोसेस रे वर्क करबे डिटेल ले गोटे आस्ला आपन then asla child labor prohibitions regulation amendment act 2016 asla now this act completely forbids the employment of children below 14 years age now kon si process ho keteta occupations ho सब किछि ताकू कैंसिल कर देले टोटली कैंसिल कर देले कि 14 वर्ष रो तळको माने केबे भी काम करि परबिनी कोनसी भी वे रे काम करि परबिनी. It also bans the employment of people between the age of 14 and 18 in hazardous occupations. 14 तळको तो काम करि परबेनी किंतु 14 ऊपर को एंड 18 तळको कि 18 पर्यंत सेमने कोनसी hazardous occupations रे वर्क करि परबेनी. Okay, so this act allows children to employed in certain family occupations and also as artists. जदि सेमने चाहे तांकर जदि फैमिली रे किछि वर्क थिबो तो फैमिली वर्क सेमने करि परबे किबा आर्ट वर्क अछि जो माने कि लाइक हमर आर्ट एंड कल्चर बेसिकली हमरो को प्लेस रे आर्ट में फेमस
आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस आसे हमरो जीएस पेपर रे को प्लेस सेंट आर्ट अछि सर सेंड आर्ट अछि पट्टचित्र अछि सर पटज रघुराज बेसिकली रघुराजपुर आपण देखिथिबे तांकर फैमिली ऑक्युपेशंस इवन बरहमपुर जो सिल्क हो कि जहां भी हो फेमस आपण कोनसा पिपिली चांदुआ भी पिपिली चांदुआ देन आपण स्टोन वर्क जोटा होते माने आपण ब्लैक स्टोन जो वर्क हेते खिचिंग रो पत्थर कारीगर कटक तारकसी एमानकर होची फैमिली ऑक्युपेशंस नाउ फैमिली ऑक्युपेशन से माने दे कैन वर्क as per the child labor prohibitions regulations amendment act 2016 and रघुराजपुर जेमति कहले पट्टचित्र से माने ताको फैमिली को हेल्प करि पाते ताकू चाइल्ड लेबर कोहा जीवन क्लियरली मेंशन है 2016 amendment act now child labor prohibitions and regulations amendment act again asila 2017 the government notified the above rules in 2017 to provide a broad and specific framework for preventions prohibitions and rescue rehabilitations of child adolescent workers ताकर गोटे प्रॉपर आसला कि प्रिवेंशन केमती करा जिवो प्रोहिबिशन करा जिवो जस्ट खाली एई यार मॉडिफाइड वर्जन से माने नै कि आसीले ओके किंतु इंपोर्टेंट आपन को पई ए जो एक्ट दिस एक्ट 2016 act then come to the child labor scenario now this is 100% helpful for your mains examinations okay child labor आपन को सिलेबस रे मेंशन अछि Odisha child labor. So Odisha has identified 2.15 lakhs child laborers in the state, representing about half of their number in the country. A survey conducted by the state labor department. याकू किए सर्वे करिवो state labor department करिवो in compliance with a Supreme Court order arrived at this figure. Supreme Court रो order ला state labor department ताकू सर्वे करची कोन पाइला ना according to this survey this figure 1,21,526 are boys and 93,696 are girls. Now this statistic by number आपन को पई important नुहे यदि आपण मेंशन करछथि भलो कथा यदि मेंशन करूनाथि ताले किछि असुविधा नै अगेन तार गोटे अप्रोक्सीमेट फिगर आपण देइ देबे रेशियो हिसाब रे आपण देइ पारंती अगेन द टोटल चाइल्ड लेबर फोर्स 23,761 children have been identified to be working in hazardous sector. एतिकी जण hazardous sector रे वर्क करछन्ती बोली गोटे रिपोर्ट आसे. The number of girls engaged in hazardous sectors were estimated at 1,367 while boys कर संख्या केते 10,294 एतिकी जण boys रहले. On the regional distribution of child labors, the survey has pointed out that state most backward districts like Kalahandi, Koraput comprising southwest Odisha has 1,86,710. The largest number of child laborers in the state, Kalahandi and Koraput. Those found in Koraput district 70,000 from 33% of the state's total child labor forces. Koraput maximum number 33%. So Koraput, Kalahandi and Sambalpur together accounts for 52% means adharu bhi adhika. Okay, 52% मैंने सब कंट्रीब्यूट करछन्ती चाइल्ड लेबर रिगार्डिंग तो आपनकर ए टोटल डाटा सब जहां भी प्रेजेंट अछि ताको नोट डाउन करना भी ये आपनको हेल्प करिवो मेंस एग्जामिनेशन इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न ओडिशा द नंबर वाज एस्टिमेटेड एट 43,671 and 13,602 respectively. Right. Now come to the next. OMECL ties up with the global consortium okay, of mineral explorations. जो ओडिशा मिनरल एक्सप्लोरेशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड OMCL ये टाई अप हला का तो एंड SPSC ये गोटे SPSC व्हाट डू मीन बाय SPSC SPSC कोइला अपन public yes state public service sector enterprises the Odisha government on Thursday tied up with the MSA जोटा कि साउथ अफ्रीका रे गोटे कंपनी एंड IDEPX ये नागपुर बेस्ड गोटे कंपनी to optimize the explorations of mineral deposit in the state केमति हमरे आउरी एक्सप्लोर करिवे मिनरल्स कारण आपण जानछथि ओडिसा रे बहुत सारा मिनरल्स अछि ए फिगर टी को आपण देखि पाथि ओके एंड abundance like OMECL चेयरमैन एबे कि होछन्ते DKC मस्ट मन रखबे बेले बेले आसे आपनकर एल्युमिनियम
regarding OMECL जेतु ये SPSC गोटे ओडिसा रो गोटे पार्ट and like state public sector enterprises से हिसाब रे यारो चेयरमैन को विषय अपन नियाति गोटे आसी पारे एग्जामिनेशन से DK सिंग्स ओके very factual question भी से मैंने पूछा दियंती then abundant reserve of high grade and leading producer in iron ore Odisha be अछि bauxite chromite manganese ore sillimanite okay quartzite peroxenite along with other minerals such as coal limestone dolomite tin nickel vanadium lead graphite मध्ये ओडिसा रे हाईएस्ट परिमाण रे एक्सट्रैक्शंस करा जाय gold gemstone diamond and then dimensions okay decorative stones okay. So gold and diamond को बेल्ट रे मिले आपन जस्ट इमेजिन करथु एंड जदी जानछु कहंतु कि gold and diamond को प्लेस रे हमर मिलथला एक्चुअली डायमंड भी मध्ये ओडिसा रे मिलथला सर महानदी अपर वैली महानदी सर हिराकुद सर गोल्ड सुवर्ण रेखा सर हां गोल्ड सुवर्ण रेखा एंड गोल्ड आपनकर महानदी डायमंड से बोध डायमंड मिलथला तो एविडेंसेस अछि महानदी जो दिक फ्लो करिछि गोल्ड डायमंड सब किछि एक्सट्रैक्शन करथला इवन एबे मध्ये सुवर्ण रेखा रो एक्सट्रैक्ट एबे बहुतटा कमी गलान आगरु करथला बहुत come to this yes guidelines for villages in Odisha to get child marriage free tech now this will help you in your paper 2 GS paper 2 maximum question ase ei type of questions GS paper 2 रो जो administrative ethics जो किछि क्वेश्चन आसे एंड रिसेंटली आपन को जो नेक्स्ट ईयर अपकमिंग ईयर रे एथिक्स पेपर हेड को बहुत सारा एथ्रू हेल्प पाइबे आपन ओके aiming to make Odisha child marriage free by 2030 2030 सुधा child marriage free करबे ओडिसा को टारगेट कर अछि women and child development okay advika initiative and ensuring 60% attendance of adolescents during the Kishori Divas now Kishori Divas केबे पालन करा जाय every Saturday for special occasion ने याकू पालन करा जाय advika कोन ना every girl is unique advika रो मीन okay is an initiative of state government for development and empowerment of adolescent girls aged between 10 to 19 years it is being implemented through the Anganwadi centers across the state Anganwadi द्वारा याकू implement करा जिवो to motivate people in stopping such marriages now a line ru question आपन कर ethics paper रे आसे और GS paper 2 रे administrative जो आपन देखबे decision making जो questions गुडा का आसे कि like आपन कर friend करो गटे जियोटे अछि एंड तार मैरिज होछि आपन कर सडन एक्शंस कोन लगो ऑप्शंस ए थाय आस्तला एटा आपन चेक कर पारे प्रीवियस क्वेश्चन जीएस पेपर 2 रे ओके प्रीलिम्स रे टू मोटिवेट पीपल इन स्टॉपिंग सच मैरिजेस इन्फॉर्मर्स विल बी अवार्डेड एबे इन्फॉर्मर्स जे रेबे ताको अवार्ड कराउछि करंटली फ्यू डिस्ट्रिक्ट रे मध्ये ताको ऑलरेडी काम स्टार्ट कराइछि अवार्डिंग करियर so the state government plans to reduce child marriages for girls from 21.3% to 10% and from 11 to 6% for boys by 2024 and completely end early marriages in Odisha by 2030 तो आपन को अंचल जदी भी आपन पाउछंती तो निहाते ओरी इन्फॉर्म करिवे सो दैट आपन को कलेक्टरेट तरफु निहाते प्राइज मिल ओके प्राइज मनी मिलगो as many as 12,000 villages in the state have been declared as child marriage free till date आज पर्यंत 12,000 टी गां रे चाइल्ड मैरिज फ्री डेट तो सेटा पेपर रे वर्क तो होची बा ग्राउंड जीरो रे केमती इंप्लीमेंट होची सेटा देखिया पे पड़िबो तो ऑन पेपर ऑन माने स्क्रीन में तो आपन को सब कुछ अवेलेबल होची लाइक 12,000 आई डोंट थिंक सो कि 12,000 टी गारे टोटली आपन को बैंड हिची ओके सो इन इंडिया देखिबा पे हिस्टोरिकल किछि अछि जदी एविडेंस इन इंडिया द मिनिमम एज ऑफ मैरिज was prescribed for the first time ये आपन को हिस्ट्री पार्ट रे मन रखिबे the Sarda Act 1929 related to the age regarding marriages okay Sarda Act law known as the Sarda Act it was later named as child marriage restraint act CMRA 1929 ने यह नेम चेंज करा गला in 1978 the law was amended to raise the minimum age of marriage to 18 years for girls and 21 years for boys. These positions remains the same even the new law called Prohibitions of Child Marriage Act PCMA 2006 which replaced the CMRA yaku replace kala Child Marriage Restraint Act. Okay.
For the Hindus, the Hindu Marriage Act 1955 sets 18 years as minimum age for bride and 21 years for as per the minimum age for the groom. The Special Marriage Act 1954 and the Prohibition Child Marriage Act 2006 also prescribe 18 years and 21 years. Okay. Now, the MWCD, the Ministry of Women Child Development, set up a committee in 2020 under the leadership of Jaya Jetli. Recently, Supreme Court आपनकर आस्तला गोटे जेमते आपन मने थिबो केते एज करा हेतला सुप्रीम कोर्ट को जेतो ऑर्डर आस्तला 21 according to this committee. Jaya Jetli, examination master say committee ko utpay bostala. Okay, Jaya Jetli, to look at the feasibility of the increasing of age marriages kete karala 21 age koria pai. So 13th foundations day re ei sabu CM PM को द्वारा ये सब अनाउंस करतला नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स डे रे ये सब इशूटा होतला 13th फाउंडेशन डे रे PM कोन करतला द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 was introduced by the government in Lok Sabha जोटा के बे scrutiny पे चाची currently under scrutiny for the parliamentary standing committee पाखरे के अछि तो एटा पूरा पास है जो बहुत शीघ्र 21 age. Now come to this part. AMNS India team to sponsor states Odisha juggernauts. Now it is related to Kho players. Okay, ताको sponsor करेगा. Now ArcelorMittal Nippon Steel India has inked a pact with the Odisha Sports Development and Promotions Company OSDPC to become principal team sponsor of state's Kho franchisee Odisha juggernauts. Okay. The agreement was signed by AMNS India Deputy Director Kiyochanti Singo Nakamura, okay, and Joint Secretary Sports OSDPC Director Ranjit Parida, Odisha. State government is excited for the first edition of Ultimate Kho as well as AMNS India's associations with the Odisha juggernauts. Okay, first time hako. First editions come to this part. Odisha Transport's Department and DMET launch gap analysis in trauma centers. Now, the Transport Department and Directorate of Medical Education and Training (DMET) have launched a gap analysis program in trauma centers. Just a minute. Trauma centers set up in the state. While there were 33 deaths per 100 accidents at the national level during 2021 and 2022, the number was 48. National level is 33, into Odisha 48 there, quite high ranking. And the reasons are lack of knowledge among the first responders. एबे भी जदि आपन एक्सीडेंट कोची प्लेस रे होची सडनली तको फर्स्ट एड न देखि सेल्फी बहुत सारा नउछन देन अपलोड करछंती सोशल मीडिया रे बहुत सारा हेई साला परे से लोक बंचुची किबा मरुची सेटा डिपेंड करे तांकर सैटिस्फिकेशन सुपर जदि तांकर सब समस्तकर फोटो क्लिक सरी गला तो तापरे तांकू हॉस्पिटल नेबार बंदोबस्त माने करछन सो दीज आर द पॉइंट्स ओके आपनकर माने ये भाइबा पई बहुत ही important about both the सब accident होची कहीं लोक मरुछन तेते so lack of knowledge regarding among the first responders कि केमि ताकू हमर जो नॉर्मली हेतै जो प्लेस रे हमर एक्सीडेंट हुए नॉर्मली पीपल गैदर करनी हम तो गैदर करनले सिटी आउ आपनकर सफोकेटेड ऑलरेडी से तार जो कंडीशंस होची तापरे पुणी जति आपन सफोकेटेड फील करबे ताकू ओके सो आउर क्रिटिकल कंडीशन है lack of knowledge okay passers by an hesitant to help कि पासस जे माने बहुत सारा टाइम रे देखा कि लोक माने के हेल्प करंतनी कि कार रे हो कार बाइक रे हो जतले हमर से जो हिट कराइतो माने हिट हितो से जो एक्सीडेंट हितो जो लोकर ताको के नबा पई राजी होंतनी ओके सो लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज इन द ट्रॉमा केयर सेंटर्स फैसिलिटीज जो रहबा कथा हमर फर्स्ट एड सेंटर ट्रॉमा केयर सेंटर सेति कि नाही बोली हमर रोड एक्सीडेंट रो आफ्टरमथ सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल ही होछ ना जदि हम स्टैटिस्टिकल वे को देखबा 2014 रे 9.93 इन 1000 रे ओके दिस इज इन 1000 इतला एंड एबे का जो टाइम पीरियड देखबा 4000 बहुत कमी छी डेवलपमेंट बहुत छी कमी छी किंतु ताहाले भी पूरा इरेडिकेट हो नै जिंसर बहुत कॉमन नै जिंसरा कंपैरेटिवली बहुत कम पास ओके
ये तो एबे टेक्नोलॉजी बढ़ी सब किछि बढ़ी किंतु फिर भी हम पाखरे एते की माने स्टैटिस्टिक्स नाही कि बहुतटा कम की हमर रैंकिंग को शो करिवो लाइक 4.74,000. Come to next. Yes. Now number 8, Jajpur's artisans showcase terracotta craft heritage at UNESCO Creative Cities Network workshop. Now UNESCO Creative Cities Network, the 3 days workshop organized at UNESCO Creative City Chiang Mai in Thailand. Okay, eta koti hitla Chiang Mai, Thailand hitla, concluded on Friday. It saw the virtual participations. Eta hitla virtual participation hitla of terracotta artisans of the culturally rich Jajpur district, along with the 500 others from across the world. तांको सहित आउ 500 जण सेठी पार्टिसिपेट करथले वर्चुअली हितला कंडक्ट हितला जाजपुर आर्टिसंस मन को हितला. द थीम कोनथला एई जो कांसेप्ट रो एई जो कंसर्ट रो थीम कोनथला द क्रिएटिव सेरामिक स्कल्पचर्ड सिटी. क्रिएटिव सेरामिक स्कल्पचर्ड city. Jajpur was the only city in India which was invited to participate in that event. सेति पई ये इंपोर्टेंट हे जे ओडिसा रो को हमर प्लेस ता बा को प्लेस रु इनवाइट है स्पेशली इंडिया रो. ये नॉट ओनली ओडिसा ये बट आल्सो ये इंडिया रो मध्य से सिंगल प्लेस जाजपुर को इनवाइट कराइता. एंड द डिस्ट्रिक्ट इज होम ऑफ 3,500 weavers, craftspersons, art and artists besides like art forms like tusser handlooms, terracotta, golden grass, stone sculpting, all these things. Come to this. The next is Odisha's tourism's look up, but Diamond Triangle awaits visitors. एठी कोन आछी आर्टिकल्स रे एटा मेंशन अछि कि ओडिसा रा गोल्डन ट्रायंगल कोटा भुवनेश्वर पुरी कोणार्क मन रखथिबे. एगुडा होची भाइबा क्वेश्चंस. व्हाट इज गोल्डन ट्रायंगल, व्हाट इज डायमंड ट्रायंगल, ये भाइबा रे फ्रीक्वेंटली आपन को पचरे. ओके, सो गोल्डन ट्रायंगल ले कोन हला ना एई आफ्टर कोविड गोल्डन ट्रायंगल ले तो विजिटर्स मानकर संख्या वृद्धि हला किंतु एठी लैक करि होची डायमंड ट्रायंगल. नाउ व्हाट इज डायमंड ट्रायंगल? रत्नागिरी, ललितगिरी एंड उदयगिरी. ओके, these are the statistics जो आपन देखिबे 2019 ने and 2021 ने एतिकी विजिटर्स आस्तले के ललितगिरी को एतिकी आस्तले, रत्नागिरी को एतिकी आस्तले. and these are not so important for us, but important कोडा कि हमर प्लेस गुडा पर regarding diamond triangles एठी कोन अछि, the importance कोन अछि. रत्नागिरी and उदयगिरी in the Jajpur districts अछि and ललितगिरी अछि कटक. There are at least 200 Buddhist sites in Odisha, but the diamond triangle attracts the most tourists as the ruins here showcase the evolution of Buddhism instead. तेरे ओडिसा रे बुद्धिज्म फ्लोरिश कला तार जते सबु माने आपन को एविडेंसेस अछि सबु को एठी कंजर्व करके रखाइ छी म्यूजियम वाइज कि म्यूजियम तो नै ए प्लेस गुडी कर अछि सब एविडेंसेस. सो ललितगिरी इज द ओल्डेस्ट इन ट्राइड बिल्ट. ओके, फर्स्ट सेंचुरी. यहाँ पर रत्नागिरी, उदयगिरी पाखरु ललितगिरी ये बहुत ही ओल्डेस्ट फर्स्ट सेंचुरी एडी रहला. एंड उदयगिरी एंड रत्नागिरी बिलोंग टू a later period. तापर पर उदयगिरी रत्नागिरी आस्ता. एंड ऑल थ्री साइट्स एठी आपन को मन गोटे डाउट थबो खंडगिरी उदयगिरी जो हमें कथा होचे सेटा होची आपन को जैनिज्म पे मन रखितबे. एंड दिस रत्नागिरी एंड उदयगिरी फॉर बुद्धिज्म. तो कंफ्यूज हेबेनी एग्जामिनेशंस आसीले कि भाइबा राउंड रे आसीले आपन इजीली एबे आंसर करबे. तो खंडगिरी उदयगिरी ये हेतला आपन को जैनिज्म पई एंड रत्नागिरी उदयगिरी ये आपन को हेतला बुद्धिज्म पई. Sites are replayed, okay, with the ruins of the sprawling monasteries, stupas, okay, sculptures. सर authority के सेटा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. Okay, रत्नागिरी and sorry खंडगिरी and उदयगिरी क्वेश्चन आपन आसला 2019 I think 2019 आपन क्वेश्चन आसला ओएस रे कि रत्नागिरी खंडगिरी and उदयगिरी रिलेटेड टू व्हिच रिलीजन. से टोटली आपन को जैनिज्म ऊपर भुवनेश्वर जो इंस्टीट्यूट अछि हमर तो पाकर जो खंडगिरी उदयगिरी अछि सेटा होची आपनकर जैनिज्म ऊपर. ओके, एंड एठी जो रत्नागिरी उदयगिरी अछि कोठी जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे सेटा होची आपनकर बुद्धिज्म ऊपर. क्लियर? ललितगिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी ये रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड याकू कहै जाय डायमंड ट्रायंगल. ओके, डायमंड ट्रायंगल. गॉट इट? But yes, गोल्डन ट्रायंगल भुवनेश्वर, पुरी एंड कन्नड़. Clear?
Now come to this part. Paleolithic age tools found from 2 caves in Rayagada. Rayagada ko pahad re like Anjipenta hill in Rayagada town. सेठू मिली हमरो Paleolithic age रो tools. Now Paleolithic age को 3 type रो divide करते हैं, lower, middle and upper. These are the age scale. And early Stone Age sites have been found in the valley of river Sons and or Son, जो कि पंजाब पाकिस्तान में city first मिलता. And यार खासियत कौन and India रो UP Bhimbetka near Bhopal. एठी जो stone tools use होतला एठी quite some बड़ा stone tools use होतला जोटा कि core stone को then धीरे धीरे कौन होला ना core stone जेतले middle हमर जेतले middle paleolithic बा हमर meso paleolithic age को जेतले हम आसिलु सेतले जो फ्लेक्स बाला मीन से जो बड़ स्टोन को हम जेतले खंड खंड कलु तो छोटा छोटा स्टोन गुडी को असला फ्लेक्स असला सेगुडा को क्वाइट शार्प ओके तो सेगुडा को यूज हला मिडिल पैलियोलिथिक एज रे फ्लेक्स यूज्ड एज टूल्स फॉर शार्प कटिंग नियर नर्मदा एंड तुंगभद्रा रे फर्स्ट मिलतला एंड अपर पैलियोलिथिक एज ए टाइम रे मॉडर्न मैन माने ह्यूमन होमो सापियंस तो हमें जानि छे मॉडर्न मैन को दे किंतु होमो सापियंस को अगर मॉडर्न मैन रो तो हम साइंटिफिक नेम जानि छे होमो सापियंस को लिखि ह्यूमन बीइंग रो तो एठी मिलतला एविडेंसेस ऑफ व्हाट होमो सापियंस ओके मॉडर्न मैन सो दारी डुंगरी जोटा अछि ओडिसा रो ये बिलोंग करछि लोअर पैलियोलिथिक एज रु एंड कुचेई कुलियोना ओडिसा रो जो अछि ये मेसोलिथिक एज रु माने बिलोंग करछि नाउ इन रायगडा रे ए सब जिंस मिलिछि ओके now universities autonomous colleges of Odisha to go paperless with the Samarth जो ऐप ता अछि ये दिल्ली गवर्नमेंट रो माने ते समर्थ पोर्टल ऐप में पोर्टल जो तो कि बेसिकली एडमिशंस वर्क करा जाय पेपरलेस ऑनलाइन पोर्टल रे एडमिशन सब करा जाय ताकू एडॉप्ट करचे बे गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस करचे ओडिसा गवर्नमेंट समर्थ पोर्टल रे ऑनलाइन एडमिशन सब यूनिवर्सिटीज मान करे अपन करो राइट and will be implemented all 12 public universities and 32 autonomous colleges in the state for better information management. Now the Samarth project aims at creating an open source, open standard and robust, secure, scalable and evolutionary process automations engines for the universities and higher education institutions. The project is being implemented by University of Delhi. As of now, Samarth software has been implemented in 50 higher education institutes across the country. 50 higher education institute country work out, right? Then come to this part. Now Odisha lacks in tap water for all mission. Okay. So target रही 2024 सुधा सबू प्रति घर को वाटर मिलो tap water to all household by 2024. किंतु ये क्वाइट एबे बहुत ही स्लो प्रोसेस रहे hamstrung means pongo हिजबा okay by the slow pace of work it has to make provisions of portable tap water supply to over 43.91 lakhs household in less than 30 months while more than 50% household have access to tap water in 14 districts Nuapada top list with 92.93% मन रखितबे नुआपड़ा टॉप अछि एतरो जो टैप वाटर रिगार्डिंग मालकानगिरी बॉटम लिस्ट रे अछि 28.21% कवर करिबी देन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड अंडर द जल जीवन मिशंस एथरे इक्वल 50-50 रेशियो रहउछि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रो 50-50 पार्टिसिपेट रहउछि जो लास्ट जो स्कीम पढ़े दिले सेटा सर यस जल जीवन मिशन स्कीम जो हमें ओडिसा रो स्टेट गवर्नमेंट रो निजरो जो स्कीम चलछि सेटा होछि वसुधा स्कीम ओके बक्सी जगबंधु assured water supply to habitations वसुधा स्कीम ये आसला 2018 रे आसला पूरी गंजाम रे फर्स्ट इंप्लीमेंट हेतला एंड अक्रॉस ओडिसा ये बे इंप्लीमेंट हे सालनानी ओके वसुधा स्कीम ओडिसा रो प्रति प्लेस रे हिसालानी वसुधा स्कीम ओके सी होची वसुधा स्कीम होची स्टेट ओन्ड यार 100% रहिची स्टेट रो किंतु जल जीवन मिशन रो 50-50 शेयर रहिची now Odisha state NIOT pact for coastal protections the state government on Wednesday joined hands with the National Institute of Ocean Technology their headquarters is Chennai okay
for the protections of saline embankment and coastal protections measures. The partnership with NIOT will help save the life and property of people in the coastal areas with protection of sea embankment. समुद्र जो पाखापाखि एरिया को आमे जो घेराव करिबा भलो भाबरे तार एम्बांकमेंट बा जो तार प्रोटेक्टेड एरियास आमे करिबा ओके बंद बांधिबा 15 link district through blockchain technology union minister कहले जेतले NIT राउरकेला रे इवेंट हेतला टेक्नोलॉजिकल इवेंट को हिसाब रे लाइक 1500 स्टूडेंट्स को से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अंडर आनी की से ऑनलाइन सर्टिफिकेट बा डिग्री प्रदान करते तो फर्स्ट टाइम हेतला ये NIT राउरकेला was the first among NITs and second after IIT Kanpur first ये implement हेतला जो सिस्टम ता IIT Kanpur रे तापर सेकेंडली NIT राउरकेला ताको इंप्लीमेंट करला ऑनलाइन डिग्री से मैंने कॉलेज जतले आपण लाइक पीजी कंप्लीट करछंती यूजी कंप्लीट करछंती आपण कर डिग्रीटा ऑनलाइन प्रोवाइड करले ओके ऑनलाइन मींस आपको रिकॉग्निशंस मिलबो सो यूनियन मिनिस्टर्स जे अछन धर्मेंद्र प्रधान digital degrees awarded digital degrees to 1555 students at the ceremony held in hybrid mode here online mode पे इतना and देखिए अब blockchain advantages ना blockchain regarding आए दिन अपन को जानो छन सब बेले blockchain regarding पढुची examinations रे ओके जदी ये blockchain अपन को जो जदी भी न पड़ला OS रे अपन को UPSC तो ये निहाती भाबरे आछे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट रहउची तो ब्लॉकचेन रिगार्डिंग आपण मोरले समस्त जानते किंतु तार एजुकेशनल सेक्टर रे कोन सब हेल्प मिलबो लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशंस अबाउट ब्लॉकचेन सो नाउ ब्लॉकचेन derives its name from the digital database or ledger where तो ledger रे प्रॉपर गोटे database रहबो digital way that is known as blockchain information is stored as blocks गोटे गोटे blocks हिसाब रे स्टोर करा दिबो like this that are coupled together from chains कनेक्ट करा तो एक्सेस सपोज ये गोटे मनुष्य आपन को प्रति ब्लॉक रे एक्सेस आपन को एठी जदी किछि ऐड करा दिबो समस्त को पाखरे से माने ऐड करै पय बाध्य हे जिवो तो समस्त को पाखरे से सेफ डाटा रहि जिवो so it offers a singular combinations of permanent and tamper evident record keeping real time transactions transparency and auditability an exact copy of blockchain is available to each of the multiple computers or users who are joined together in a network. Any new information added or altered via a new block is to be vetted and proved by over half the total users. Okay. And the blockchain and digital education fulfilling the objective of national education policy the national education policy 2020 calls for introducing multidisciplinary educations where students would be able to choose their own combinations of major and minor subject along with the flexibility in course durations. In this context, blockchain can help implementing the multiple entry and multiple entry and exit structure. In this way, it can help in the education sector. Now in Odisha, green energy gets focus in new renewable energy policy 2022 and सर ब्लॉकचेन सर माने कोन माने डाटाटा समस्त हम पाखर रहइबो ना सर कोन सर ASO मींस ने यार कनेक्टिविटी जो रहला कि अब सपोज आपन को एक्सेस ता सपोज ये ब्लॉक माने आपन को यदि चारटा की ब्लॉक्स होइला ओके दीस आर द ब्लॉक्स एटा आपन कोनसी भी वे रे आपन यूज करि पारे ब्लॉक्स मींस आपन को ऑनलाइन डाटा सब रहि पारे आपन को बैंक रो ट्रांजैक्शन सब रहि पारे ओके ब्लॉकचेन सेतरे कोन क्लाउ हैक करि पारे सपोज एठी जने जो चारटा किबा पांचटा बाक्स अछि if I am not wrong तो मत जदी मु wrong थि तो मते रेक्टिफाई प्लीज करिवे जति कि मु जानछि लाइक ब्लॉक वाइज सेठी सब डाटा थिबो प्रति जन को पाकर एक्सेस जदी भी थिबो सपोज जने एठी हैक करू ओके हैक करले समस्त को पाको को इंफॉर्मेशन जो थिबो एटा टाइम रे से ओनली केवल मात्र गोटे कंप्यूटर को हैक करि परिबनी सपोज एठी जदी हैक करि भी देला बाकी जहां सब डाटा थिबो एठू ब्लॉक माने हटि जिवो ओके एटा टाइम समस्त चेंज न करले ये निजे केबे भी सिंगल एंटिटी एंटर करकी सब गुड को ब्लॉक रु से डाटा केतले भी माने नहीं परिबन सिंगल को से हैक करला तो बाकी सब चेन वाइज से माने डिसरप्ट हे जिवे ताकू प्रॉपर डाटा मिल करबन तो एठी ये क्वाइट माने रिलायबल सोर्स यस सो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी फॉर 2022 and 30
The International Forum for Environment, Sustainability and Technology, IES, iForest, okay, iForest, on Tuesday, initiated a dialogue on the preparing of roadmap. What a roadmap से मैंने create करिए बोली कहूँचंती ओडिशा रे जो कि renewable energy केमती भाବରେ trigger करिए बढ़िया हो. Like the present renewable policy introduced in 2016, जहाँ की time period एक वर्ष रे end होगा जाऊँ. Though the present policy had set a modest target of installing 2,750 megawatt of renewable energy capacity by 2022, only 617 megawatt was installed out of this figure, which is less than 25%. Okay, target end by March. Next, renewable purchase obligations RPO set under the central government guidance. It is RPO target the state for 2022 and 2023 is 11.5%, which means 11.5% of electricity consumed in Odisha has to be renewable energy in the current fiscal year. The target will increase to 43.33% by 2029 to 30. President and CEO of iForest, Chandra Bhushan, said that the state has a large renewable energy potential that needs an innovative policy to unlock. Odisha पाकर capacity अच्छी renewable energy को use करिए पाएं, किंतु ताको कोटे proper roadmap दरकार. So the new renewable policy should be 30 gigawatt renewable energy by 2030. Produce करिए पाएं, जिन्होंने target new renewable energy policies are. Then come to this part, like this Biju Patnaik award for Odisha's first international cricketer Debashish Mohanty. Debashish Mohanty अपन जानते हैं क्रिकेट यदि अपन देखते हैं first year Odisha रो international cricket खेलते हैं Odisha तरफ will receive the highest sports award of Odisha, that is Biju Patnaik Sports Award 2021 for lifetime achievement on National Sports Day. केबे ना August 29 ने अपन National Sports Day. Award regarding question अपन को ऐसे examinations में जयदेव award ऐसे 2018 में बहुत सारा दी तीन टा अपन को ओडिशा रो award गुड़ा को आस्ता. तो बिजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड जो था कि हाईएस्ट अवार्ड अछि स्पोर्ट्स रिगार्डिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड ताको मिलछि देवाशीष महांती को. एंड ताकर फर्स्ट डेब्यूट मैच थिला 1997 ने एंड प्लेड 2 टेस्ट 41 ODIs and 117 domestic matches. ता बाद अपार्ट फ्रॉम दैट वेटलिफ्टर छिली दल बेहेरा एंड शूटर श्रीयंका सडंगी, ओके, यहाँ को मध्य मिलुछि बिजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. एंड पारा एथलीट्स जयंती बेहेरा स्कोर्स विष्णु प्रसाद मिश्र, यहाँ को मिलुछि बिजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कोचिंग. यहाँ को कोचिंग पई मिलुछि विष्णु प्रसाद मिश्र. ये कहां को कोच पारा एथलीट्स जयंती बेहेरा. Then Odisha to implement ORUA to replenish groundwater tables. Now the full form of ORUA is artificial recharge to underground aquifer to replenish the depleting groundwater. जितना हम excessive use करते हैं groundwater तो कोटा limited amount था ना, तो excessive use को ले कौन है तो तार layer down ही जाए तो table in the state. The scheme will be implemented in the 6 semi-critical and 26 approaching semi-critical blocks having groundwater extractions of more than 65%. The entire state at an estimated cost of rupees 49.23 crores over a period of 5 years from 2022-23 to 2026-27. Official source said maintenance of structures will be done by Pani Panchayat. Now this Pani Panchayat ये अपन को ना प्रीलिम्स रे आसीबो ना मेंस रे आसीबो, डायरेक्टली अपन को वाइवा राउंड रे आसीबो. जो माने एग्रीकल्चर रो जाइतले स्टूडेंट्स माने एग्रीकल्चर ऑप्शनल सुटिले तांको एटा निहाती आसे पानी पंचायत. पानी पंचायत is a voluntary activity of a group of farmers engaged in a collective management, harvesting and distributions of surface water and groundwater, well and percolations of tanks. Okay, यार फादर किए इंडिया रे. Now this is important for your prelims and for viva. Okay, यार फादर किए विलास राव सालुंके महाराष्ट्र रो पानी पंचायत रो फादर. ये जो माने जो आइडियाज से आंतले पानी पंचायत
जेमती हमरो ग्रीन रिवोल्यूशंस रो फादर किए सर इंडिया रे इंडिया रे वर्ल्ड रे स्वामीनाथन सर एमएस इंडिया स्वामीनाथन सर इंडिया रे सर इंडिया रे एमएस स्वामीनाथन सर ग्रीन यस एंड वर्ल्ड रे वर्ल्ड रे सर वर्गीस क्यूरिन सर वर्ल्ड रे किए सर वर्गीस क्यूरिन बोले सर कंफर्म नोट समस्त जानछन्ती सर नॉर्मल ऑलमोस्ट नॉर्मल समथिंग वर्लॉग नॉर्मल वर्लॉग सर मेक्सिको रू नॉर्मल वर्ल्ड सेतिम पचारि समस्त जानछन्ती वर्गेस कुरेन रिलेटेड टू व्हाट से परा व्हाइट ऑपरेशन रिवॉल्यूशन White revolution. व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड वर्गेस कुरेन मन रखितबे एगुडा सब वाइवा सर क्वेश्चंस सर सर वर्गेस जो वर्ल्ड रे सर नॉर्मल नॉर्मन बोरलाग अच्छा ये मेक्सिको रो फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट मेक्सिको देन इंडिया रे एमएस स्वामीनाथन वर्गेस कुरेन से होचंती ऑपरेशन फ्लड रो यस सर नॉर्मल बोर्ड व्हाइट रिवोल्यूशंस क्लियर कंफ्यूजन सेते हम पचारि समस्त जानछन्ती so there are now 35,511 pani panchayat involved in the getting irrigations water to the field. Okay, the main job is to ensure that not a single hectare of land under irrigations is water deprived or water denied. This is pani panchayat motto. Now come to this part. CM Navin Patnaik launches Startup Odisha Yatra 2.0. जोतरी की सीए कौन करिवे ना स्काउटिंग ग्रासरूट इनोवेटर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स and promoting the entrepreneurship among the youth. The yatra will cover 100 educational institutions in the 30 districts over a period of 60 days. During the yatra, boot camps will be organized at various institutions across the state to encourage the idea generations and develop of spirit of entrepreneurship. The state has a mission of creating 5,000 startups by 2025, and Startup Odisha Yatra 2.0 will be pivotal, means mainly ये कौन करबा ना bringing innovative ideas to the forefront. Now pivotal मने पड़ला गोटे आपन को साइंस रे गोटे क्वेश्चन आसे pivotal. Sorry pivotal related to what? Science रे आपन को जनरल साइंस रे जेतो क्वेश्चन आसे pivotal joints. This is pivotal joints. On structure गोटे क्वेश्चन मस्ट आसे एग्जामिनेशन साइंस रो pivotal joints से होची आपन को एटा ओके बैक साइड जो आपन को स्पाइनल कॉर्ड से तो हेड रो जो कनेक्शन है दैट इज नोन एज pivotal joint. Pivotal joint तक हुआ जाए तार pivotal movement देखने को you can check. Now CSM Tech Enrolled. CSM गोटे कंपनी होची भुवनेश्वर अछि अपन जो हमने जानथिबे CSM गोटे सब application based company, software company, leading IT service company, has been enrolled by the United Nations framework on the climate change regarding what? Climate neutral now. Regarding net zero of what? Net zero emissions of CO2. Net zero emissions क्षेत्र ये tie up करची work करियो and enshrined the Paris Agreement. To adopt the same year, more than 3,000 companies have made net zero commitment as the part of UN Race to Zero campaign. Okay. So Paris Agreement regarding के कौन जान सकती? सर 2016 रे सर साइन करा जायछा जोटा कि सर क्योटो प्रोटोकॉल छोटा 1997 रे तारो गोटे अमेंडमेंट वर्जन सर जोटा कि सब कंट्री मानन डेवलप कंट्री मानन को टिके टाइट रखा जायछला बट लिस्ट डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री को टिके रिलैक्सेशन दिया जायछला बट 1997 ठारो देखिले कि डेवलप्ड आउ सॉरी डेवलपिंग एंड लिस्ट डेवलपिंग कंट्री माने टिके इरेस्पॉन्सिबल है कि कार्बन डाइऑक्साइड टिके बहुत प्रोड्यूस करथले दैट्स व्हाई सर पेरिस क्लाइमेट डील आनिले जा फल रे गोटे एनडीसी साइन करा गला जोतरे कि नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन गोटे दियाला सब कंट्री कर गोटे गोटे प्रोस्पेक्टिव वाइज रे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करिवे Yes. पेरिस कार्बन क्रेडिट को इंट्रोड्यूस कराइतला सर
Yes, so I'm discuss करिवा regarding Paris Agreement. देखिलबा 196 टा कंट्री रे पार्टिसिपेट करथिले, राइट, एंड COP 21 रे को जे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अप्रैल 2016 ने याको फुल्ली साइन करायतला, जदियो प्रस्ताव आइतला आपनकर डिसेंबर 2015 रे पेरिस रे। ऑब्जेक्टिव कोन थला ना, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड वाज टू अचीव द लॉन्ग टर्म टेंपरेचर गोल, बेसिकली द greenhouse gas. So the main goal of Paris Climate Accord is to limit global warming to well below 2 degrees Celsius and preferably limit to 1.5 degrees Celsius compared to the pre-industrial level. The agreement talks about 20-20-20. Now examination regarding question 20-20-20 related to which agreement, that is Paris Agreement, means carbon dioxide emissions reductions by 20%, work on increasing the renewable energy market share by 20%, target to increase the energy efficiency by 20%. सेतमे कोली आजिरो जो particularly current affair class टी अछि आपण जमा भी याकू मिस करबेनी इन द सेंस आपण याकू नोट डाउन करने बहुत सारा क्वेश्चन एठी जहां भी ऐड अछि से आपण को इनडायरेक्टली साइंस रे भी आसीबो, एनवायरमेंटल इश्यूज रे भी आसीबो, ओके, नॉर्मल आपण को करंट अफेयर भी आसीबो, याकू मन रखिदो 20-20-20। सर एबे सर पेरिस क्लाइमेट डेटा जो सर 20-20-20 टारगेट है बट सर एबे हाई एम्बिशन कोएलिशन रो सर एबे 30-30 टारगेट रे भी निया जाय छै सर, तो पेरिस क्लाइमेट डी रो अमेंडमेंट है सर लिस्बन डिक्लेरेशन जो सर कहले लिस्बन डिक्लेरेशन, किंतु बेसिकली क्वेश्चन आपण को आसीबो जो 2020 तो कहले ना, एई जो पर्टिकुलरली हमने मेंशन कर देबे 2020 रिलेटेड टू व्हिच क्लाइमेट जो अकॉर्ड। ओके सर, यस सर, एई टाइम पर्टिकुलरली एई टर्म टा को ही हमने मेंशन कर देबे, एगुडा किसी आपण को दरकार नहीं, दीज आर नॉट सो इंपोर्टेंट यदि आपण यूपीएससी प्रिपरेशन करछन तो दीज आर इंपोर्टेंट, बाकी ओपीएससी पई आपण को ई टर्म ही काफी अछि 2020-20। ओडिशा स्टेट मिलेट मिशंस जोटा कि रिसेंटली एबे मन की बात रे भी कहितले पीएम मोदी, मिलेट मिशंस ओडिशा रे चलछि हमर मिलेट मिशन, तार एक्सटेंशन करा गले 6 ईयर पई, नेक्स्ट 6 ईयर पई ये इंट्रोड्यूस हेतला 2017 रे, basically related to ragi, mandia. Recently, PM Modi also announced about use of millets. Odisha approved budget kete kochi 2,808.39 crore for the extension. Right. Then crime against women surged in Odisha, 5th among state NCRB report. Right. Crime against women. So Odisha, which figures among the top 5 states of the countries in terms of crimes against women, reported to the highest incidence of assault on women. Uttar Pradesh record the highest number of crimes against women from the state, while among the metropolitan city, Uttar Pradesh highest अछि UP. Then Delhi reported the highest number of cases. तापर अछि राजस्थान, ओके, स्टेट वाइज एबे कहूची ये तो रहला आपनकर यूनियन टेरिटरीज, स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश सेकंडली, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, while Odisha reported 31,352 incidents. Nagaland stood out with the lowest number of crime against women registered, okay, past 3 years. The highest rate of crime against women in 2021 increased to the percentage wise हमें comparatively कहिबा आसाम रे सबको मैक्सिमम इंक्रीज कर देखो 100% हुए 168.3% से इंक्रीज करथिया, हाई रैंकिंग रे इंक्रीज करथिया, ओके, सडन हाई हेची एगुडा को रेगुलरली माने याकर बढ़ी चलछि जो जिंसटा हमने कंपैरेटिवली सही रेशियो रे बढ़छन्ती, किंतु ये सडन इंक्रीज करछि आसाम रे क्राइम अगेंस्ट वुमेन. So crime against women rose by 15.3% in 2021. Now National Crime Records Bureau has released the report titled accidental, यार title माने को रिपोर्टर टाइटल कौन थला सेटा भी आपन को एग्जामिनेशन में पता है, accidental deaths and suicides in India and crime in India report 2021. NCRB a report under ए सब जिंसो बाहर करछि. Now SFF under 20 football champions हेतला कोटी कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर रे डिफीट करतला बांग्लादेश को 5-2 रे. साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशंस ये केबे फाउंड हेतला 1997 रे, यार हेडक्वार्टर अछि ढाका.
School and Mass Education Department of Odisha signed MOU with Jepal Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab. School and Mass Education Department of Odisha MOU sign for gender equality. Examinations ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦରକାର କୋଉଥି ପାଇଁ MOU sign ହେଇଥିଲା gender equality. It was founded in 2003 and your headquarters is Cambridge, Massachusetts, USA. Soumya Ranjan Biswal was UN India Youth Advocate. The environmentalist, Odisha's boy got this award on International Youth Day. He is an environmentalist working for the protection of olive ridley turtles, sea turtles, also for climate change, restoring mangroves and salt marshes. Other UN Indian Youth Awardees, Mohammad Siraj, Bhabi Barad, okay, Ankita, Mansi, Mursal. Yes, that's it. That's it for today. Yes, that's it for today.